आज की वीडियो हम बात करेंगे सैमसंग गैलेक्सी M21 2021 मॉडल के बारे में। जी, तो अभी हम इसका स्पेसिफिकेशन पे भी नज़र डालते हैं और ये भी देखते हैं ये किस प्राइस रेंज में आता है। प्राइस रेंज का बताता चलूँ, ये पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है, ये सिर्फ इंडिया में अवेलेबल है। और इंडिया में इसकी लगभग प्राइस 13,000 रुपये शायद। मैं भी कंफर्म करके बताता हूँ आपको। अभी इसका लुक्स देख सकते हैं आप। ये काफ़ी एवरेज फ़ोन है अपनी प्राइस के हिसाब से, कुछ ज़्यादा ख़ास नहीं है इस फ़ोन के अंदर। अभी हम चलते हैं इसकी स्पेसिफिकेशन की तरफ। ये देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी M21 मॉडल, रिलीज बाय सैमसंग इन जुलाई 2021 एंड 192 ग्राम्स का वेट है। एंड द थिकनेस ऑफ दिस मोबाइल इज़ 9 mm, Android 11 and 34 gigabyte and storage and 6.4-inch display, 1080 by 2340 pixels, 48 megapixel camera with 4K video recording and 4 gigs of RAM and 6 gigs of RAM. As you can see, there is Exynos processor here and the long lasting battery 6000 mAh. I like this battery and the long lasting 6000 mAh battery. And there is the build of this mobile: front glass, plastic back, plastic frame, dual SIM, nano SIM, dual SIM, super AMOLED display and 84.2% screen to body ratio. And there is 10 nanometer processor used by Samsung, and processor is Exynos. Samsung का अपना प्रोसेसर Exynos का ही है। और देख सकते हैं आप, ये काफ़ी अच्छी बात है। and there is cameras 48 megapixel shooter real and 8 megapixel 5 megapixel capable to shoot a 4K video, and the front camera is 20 megapixel with f2.2 aperture. Video is 1080p at 60 fps, 3.5 mm audio jack available here, and type C cable. 6000 mAh battery is really long lasting battery, and the 50-watt charger. As you can see, the price of this mobile in India 12,999, 30,000 rupees in India, 13,000 rupees in India. Now we will talk about this mobile is a value of money or waste of money. I would say it's value of money भी और not value of money भी, क्योंकि पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं है। तो मेरे ख्याल से पाकिस्तानियों को यहाँ से हटा देते हैं। अब हम बात करते हैं इसकी इंटरनेशनल की। इंटरनेशनल तौर पे वैल्यू ऑफ मनी है कि नहीं है? मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा वैल्यू ऑफ मनी है। एक्सिनोस का प्रोसेसर यूज़ किया गया है, 6.4 इंच का डिस्प्ले, 48 मेगापिक्सल 4K कैमरा, 6000 mAh की लंबी बैटरी है और 6 GB रैम भी है इसके अंदर। एंड ग्राफिक्स काफ़ी अच्छे हैं, कैमरा भी काफ़ी अच्छा है। बस इसमें अगर एलुमिनियम फ्रेम और ग्लास फ्रंट और बैक आए तो फ़ोन बहुत अच्छा होना था अपनी प्राइस रेंज के हिसाब से। मेरे ख्याल से ये किंग होना था अपने सैमसंग के मिड रेंज लाइनअप का। आप क्या कहते हैं इसके बारे में और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं। पता नहीं ये पाकिस्तान में अनऑफिशियली तौर पे अवेलेबल है कि नहीं है, जैसे कि दूसरे किट मोबाइल फ़ोन अवेलेबल होते हैं सैमसंग के फ्लैगशिप एस और नोट सीरीज़ के। इस फ़ोन का मुझे सही आइडिया नहीं है कि अवेलेबल है कि नहीं है, और अगर किसी को पता हो तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं।
अभी हम बात करते हैं इसके डिज़ाइन के ऊपर। डिज़ाइन मेरे ख्याल से इतना कुछ ख़ास भी डिज़ाइन नहीं है। फ्रंट पे तो डिसेंट लुक देता है, मगर बैक पे काफ़ी पुराना सा और सस्ता सा लुक आता है इस पर। कोई इतना ख़ास ज़्यादा प्रीमियम लुकिंग फ़ोन नहीं है ये। बैक से देख सकते हैं आप, देखें काफ़ी, अगर मैं कहूँ इसकी लुक काफ़ी चीप है तो ये गलत ना होगा। काफ़ी इतनी बुरी लुक है इसकी, बकाया फिर भी पीछे कवर लगा लें इसका, ये अच्छा लगेगा फिर वो फ़ोन। बकाया इस प्राइस पे क्या क्या मिलता है, 13,000 रुपये इंडियन रुपीज़, और जब पाकिस्तानी रुपीज़ है वो इसके 32,000 रुपीज़ बन रहे हैं। ये फ़ोन आपको कैसा लगा बताएं मुझे नीचे कमेंट्स में। किसी और टॉपिक में वीडियो चाहिए तो कमेंट्स कर सकते हैं। एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।